Hello students, in the last lecture we have seen the new concept, that is the law of diminishing marginal utility. What we have seen? The law of diminishing marginal utility. In that we have seen the statement of law. That statement of law given by Alfred Marshall is also known, or we can say that is the definition of marginal utility, diminishing marginal utility. In this session we will see this is called schedule and this is its graph. Okay, the curve of law of diminishing marginal utility, and this is the schedule of marginal utility. In that law, what we have seen, we have taken the example of chapatis. Okay, in that we have said, for example, if the diet plan of Mr. X is of 4 chapatis. Okay, I am repeating this example. It means his total utility is 4 chapatis. Okay, and marginal utility, additional increment or increment made in total utility is called marginal utility. Now here we need to understand the law of diminishing marginal utility. Once you understand total utility and marginal utility, then it is easy to understand diminishing. Diminish होना मतलब क्या? Reduce होना, कम होना. क्या कम होना? Marginal utility. वो कैसे कम होती है? With the help of this schedule and graph we will see. In here we have taken the example of unit of commodity X. We have said that commodity as X commodity, but as per our example we can take it as a chapati. Now here at point 1, when the total utility is 10, marginal utility is 10 also. But as the total utility increases, okay, from 10 it is moved to 18, but your marginal utility is decreasing. Okay, now here we can say, here it is 10, but here it is reduced by 8. It means the difference of this is 8. Now here at the point when total utility is 24, marginal utility is 6. Likewise here we come at point 6. Here when the total utility is 30, marginal utility is 0, and this is, here we can say that it is a point of satisfaction. क्या है ये? एक point of satisfaction. Now how we can correlate? As we have seen, 4 is our diet plan. या फिर आप उससे ज्यादा खा नहीं सकते हो, ठीक है? 4 चपाती से ज्यादा अगर आप ओवर ईट करोगे तो वो चपाती की यूटिलिटी, मतलब वो चपाती का इंपॉर्टेंस आपके लिए मिनिमाइज होते जाएगा. एट वन पॉइंट इट विल बिकम निगेटिव. गेटिंग माय पॉइंट? हियर इट विल बी निगेटिव. इन दिस शेड्यूल इट इज जस्ट सेड कि 4 से ज्यादा अगर आप 5th या 6th खाते हो तो क्या होगा, वो एट वन पॉइंट यू विल फील इरिटेटिंग फॉर दैट चपाती. इट मीन्स वो उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, 0 या निगेटिव हो जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन ओनली विद द शेड्यूल एंड ग्राफ. ठीक है, हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, इसमें हमने क्या शो किया है, मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे कर्व में ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है. हियर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमने यहाँ पे शो किया है, एंड देन इट इज क्या है, ये डिमिनिश हो रही है. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एट वन पॉइंट इट इज 0 एंड देन इट इज कमिंग निगेटिव. इसके लिए आपको जस्ट ये शेड्यूल को समझना ज्यादा जरूरी है. शेड्यूल के साथ साथ ये कर्व को बनाया गया है. यहाँ पे हमने कमोडिटी ली है मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे कमोडिटी की ये है, दिस इज यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी, और ये दोनों है कर्व की मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसे एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन आने के बाद में वो डिमिनिश होती है, मतलब रिड्यूस होती है या कम होती है. दिस इज व्हाट इज द मेन थिंग. मेन आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन जब खत्म हो जाता है, देन यू स्टार्ट फील स्टॉप टू टेक, मतलब यू डोंट वांट टू टेक दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. जैसे कि हमने ब्रेड का एग्जांपल ले सकते हो, पिज्जा का एग्जांपल ले सकते हो, चपाती का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी. व्हेन यू आर हंग्री यू फील यू वांट टू ईट मोर. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सेम था, यहाँ पे क्या हुआ, एक चपाती आपने खाई तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगा. इसके लिए क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होते गई. ठीक है, फिर और नेक्स्ट खाई और कम होती गई, और नेक्स्ट खाई और कम होती गई. एट वन पॉइंट यू फील फुल, नाउ यू डोंट वांट टू ईट मोर.
उससे ज़्यादा आप खा नहीं सकते हो. Why I am giving you such kind of example? ब्रेड है, पिज्जा है, क्योंकि you can better understand with that example. यही है फंडा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. डिमिनिश होना मतलब रिड्यूस होना, कम होना. क्या? मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन मेड इन टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या है? ये आपका जो डाइट का एक प्लान है, या डाइट प्लान बोल सकते हो, ये आपकी उतनी ही, आपका एपेटाइट उतना ही है, आप 4 से ज्यादा नहीं खा सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एट वन पॉइंट वो कैसे डिमिनिश होती है, कैसे माइनस होती है, विद द एग्जांपल ऑफ दिस schedule and the graph we have seen. Now we have seen in the last lecture 5 also we have seen कि what are the assumptions and criticisms. assumption में मेन क्या हुआ? rationality है, then cardinal measurement, homogeneity, continuity, divisibility, single bond. ठीक है, तो ये सारे assumptions को हमने बहुत अच्छे से लेक्चर 5 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. Still you have any doubts, you can ask in the group, but these are the assumptions. These 5-6 assumptions are very important and essential. Otherwise you cannot understand this law. Law को समझने के लिए क्या है? assumption. assumption किसने किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने. तो who is the originator of that particular law? अगर वो law को समझना है तो first of all you have to understand that statement of law, and that statement of law itself is a definition of the law. And when you understand this law, तो ये law में आपको यही समझना है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. टोटल यूटिलिटी मैंने आपको समझाया कि आपका डाइट प्लान या आपका एपेटाइट. मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन और इंक्रीमेंट मेड इन टोटल यूटिलिटी, एंड हाउ दैट एडिशन और इंक्रीमेंट गेट डिमिनिशेस, मीन्स रिड्यूसेस एट वन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव एंड इट डिमिनिशेस. So this is all about the graph and schedule of diminishing marginal utility. Thank you.